Hello students, this is the solution for your full test 1, right? Starting from मेरा portion में question number 93 से start होता है. The gross primary productivity is the rate of organic matter assimilation by the producers over a period of time. Produce कर रहा है over a period of time, that is GPP. This is correct. The formula for relating the productivities is NPP is equal to GPP minus R, where R is the respiration loss. Correct. So in this case, both the statements are correct. Option हो जाएगा C. Coming to the next question, my question is question number 95. Which of the following characteristics are typically associated with benign tumors? Benign tumors के बारे में it shows metastasis, no metastasis, malignant tumor दिखाता है, generally confined to the origin location. This is correct. Causes minimal damage to the surrounding tissues. This is also correct. Option हो जाएगा B, where B and C are correct. The next question is question number 97. Match the following here. Glucagon is secreted from the pancreas, right? Follicle stimulating hormone, adenohypophysis hai, right, which is the anterior pituitary. Aldosterone comes from your adrenal cortex, and melatonin comes from the pineal gland. तो option हो जाएगा A is 3, B is 4, C is 1 and D is 2. Coming to the next question number 100. The temporary stoppage of menstrual cycle in females typically occurring during the age of 50. 50 के बाद में जब menstrual cycle stop हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं menopause. Okay. Coming to the next question. Question number 106. Question number 106. The blood vessels that connect the capillary network of intestine to liver in a frog. So intestine to liver in a frog में वो क्या होता है? That is a hepatic portal system. So hepatic portal system connects the network from intestine to the liver. The next question is question number 1010. 1010. The interaction between sea anemone and clownfish, where the fish gets protection from the predators which stay away from the stinging tentacles, and anemone is neither harmed or benefited. This is an example of what? जहाँ पे एक को benefit रहा है दूसरा neutral रहता है, that is commensalism. It is called as commensalism. Question number 1111. Find the correct statement regarding human embryonic development. The heart is formed after 2 months of gestation. 2 months नहीं होता है, ये 1 month होता है. This is wrong. The first sign of growing fetus is the appearance of heartbeat. This is correct. The limbs and digits develop by the end of the first month. नहीं, end of the first month नहीं, end of the second month होता है, तो ये वाला गलत है. The major organ system are found at the end of the 12 weeks or first trimester. This is correct. The appearance of the hair on the head is usually observed during the 5th month. This is also correct, along with the movement भी जो होता है वो इसी मंथ में दिखा जाता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज डी, बी डी ई ओनली. Coming to the next question. The tadpoles of the frog respire primarily using tadpoles. Tadpoles वाटर में रहते हैं, so उसका primarily क्या होगा? D. 113 का हो गया D. ठीक है. Question number 14. Consider the following statements that regarding the function of 114 का statements regarding the function of adrenal medulla. अभी adrenal medulla से क्या निकलता है? Epinephrine और norepinephrine, right? So epinephrine, norepinephrine क्या करेगा? It will cause pupillary dilation. It is a hyperglycemic hormone, right? It causes piloerection. It increases the state of heart contraction, right? So all of them are correct. All of them are correct. Coming to the next question, question number 116. Generation of secondary messengers. Secondary messengers कहाँ पे रहता है? जहाँ पे water soluble रहेगा. Water soluble जो भी molecule रहेगा उनके लिए secondary messenger generate करना पड़ेगा. तो यहाँ पे working mechanism hormone में यहाँ पे water soluble hormone का example कौन है? Insulin and thyroid stimulating hormone are the examples of your ones that are water soluble and require a secondary messenger. ठीक है? Okay. Coming to the next question, question number 17, right? Which of the following is an 107 distilled alcoholic beverage? इसमें distilled alcoholic beverage कौन है? Rum. Rum is the distilled alcoholic beverage. Okay. Okay. Coming to the next question, question number 119. Again, match the following with their functions. Fimbre क्या है? Fimbre helps in the collection of the ovum after ovulation. Endometrium is the inner lining of the uterus. Corpus luteum, it helps in secretion of progesterone and trophoblast. This is the outer layer of the blastocyst, right? So option क्या हो जाएगा? A is 3, B is 1, C is 2 and D is 4. Coming to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, which of the following is an example of in situ conservation? in situ conservation मतलब उसी जगह पे कंजर्व करना. सो नेशनल पार्क एज एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बोला है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जब रेस्पिरेशन या फिर आर करता है वो कहाँ से करेगा? वो ऑब्वियसली ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ही करेगा. तो सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर द प्लांट्स बिकम्स योर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Now coming to the next question, question number 126. 126 में again match the following with the hormones that these organs are secreting. तो हार्ट से क्या निकलता है? हार्ट से एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर निकलेगा. किडनी से क्या निकलेगा? किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या निकलेगा? कोलेसिस्टोकाइनिन निकलेगा. एंड पैनक्रियास से क्या निकलेगा? इंसुलिन निकलेगा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? A is 3, B is 4, C is 1 and D is 2. Okay. Come to the next question, question number 128. Question number 128, cyclosporin A produced by fungus Trichoderma polysperma is widely used in medicine as. So cyclosporin A जो Trichoderma polysperma होता है वो that is utilized as a immunosuppressive agent. immunosuppressive agent में वो utilize होता है. Come to the next question, question number 131. Question number 131, which of the following statements about cancer detection and treatment are correct? Biopsy and histopathological studies detect cancer in internal organs. This is correct. Chemotherapeutic drugs are known to cause side effects like hair loss. This is also correct. Alpha interferons form radiation therapy. Radiation therapy नहीं, वो immunotherapy में लगता है, तो ये वाला गलत है. The patients giving substance called biological response modifiers is alpha interferons which activates the immune system and helps in destroying the tumors. This is also correct. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा A, B and D. A, B and D are correct. Okay, coming to the next question, question number 132. Given below some statements regarding infertility and its management. ठीक है. So the problem of being unable to produce children despite unprotected sexual cohabitation is termed as infertility. This is correct. In India, male partner is typically blamed for the couple childless. Male partner को blame नहीं किया जाता है. It is the female partner that is blamed. Right. Reason for infertility can be purely physical, psychological, or drug use. This is correct. Assisted reproductive technologies are employed to assist couples where corrective treatment for infertility is not possible. This is also correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा C, where A, C and D are correct. Come to the next question, question number 133. The gap between the first meiotic division and second meiotic division much longer for females compared to males. This is a true statement. क्योंकि meiosis 1 in case of females before birth होता है. ठीक है, बिफोर बर्थ, राइट, ओव्यूलेशन, राइट. एंड वेयर एज आपका जो मेयोसिस 2 होगा, मेयोसिस 2 आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. सो बिफोर बर्थ, ठीक है, आपका क्या हो जाता है? मेयोसिस 1, राइट, एंड सेकेंडली मेयोसिस 2 आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है. Okay. Coming to the next question, the polar body is formed after the first meiotic division in the primary oocyte. This is correct. First polar body is formed after the first meiotic division in primary oocyte. This is correct. ठीक है. The meiotic division the first meiotic division for human female gamete starts earlier than that of the male. Yes, in the embryonic stage में start हो जाता है, whereas male में क्या होगा? Male में puberty के time पे होता है. ठीक है. And luteinizing hormone surge leads to the rupture of the Graafian follicle and subsequent ovulation. This is also correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? All of them are true. All of them are true. Question number 135. Question number 135. The primary function of Golgi apparatus is to package and modify proteins and lipids synthesis in endoplasmic reticulum. Because secretory vesicles carrying materials from here fuse with the cis phase of Golgi apparatus when modification takes place and products are released from the trans phase. So thus it becomes its primary function. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन होगा C. Both A and R assertion and reason are true and R is the correct explanation of the A. Okay. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 136. क्वेश्चन नंबर 136 में बोला है कंप्लीट द एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू क्रेनियल कैपेसिटी. होमो हैबिलिस का कितना है? होमो हैबिलिस 750 सीसी. मतलब होमो हैबिलिस का बेसिकली रेंज क्या था? 650 से 800 सीसी. वेयर होमो इरेक्टस का रेंज कितना था? 850 से 1100 सीसी. सो ऑन एन एवरेज होमो हैबिलिस अगर 750 सीसी दे रहा है तो होमो इरेक्टस क्या देगा? होमो इरेक्टस 900 सीसी देगा एवरेज में. ठीक है.
Question number 137. In human's body, the lymphocytes are produced and mature in the primary lymphoid organs. They subsequently migrate to the secondary lymphoid organs and tissues for interaction with antigens. Which of the following are primary lymphoid organs? Very easy. Primary lymphoid organs क्या क्या है? मेरा बोन मैरो है एंड थाइमस है. ठीक है, बोन मैरो एंड थाइमस है प्राइमरी lymphoid organs. तो आंसर हो जाएगा सी एन ई ओनली. Okay, coming to the next question. Question number 138. 138 में habitat loss and fragmentation. It is an example where Amazon rainforest is being cleared for soybean cultivation. Overexploitation is the extinction of the stellar sea cows and passenger pigeon. Alien species invasion, Nile perch, right? Extinction of more than 200 species of cichlid fishes in Lake Victoria. And co-extinctions, when extinctions of parasites, when host fish becomes extinct या फिर host extinct हो जाता है. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी. Coming to the next question number 140. Which are the following example of acquired immunity? Acquired immunity का फंक्शन क्या है? यहाँ पे acquired immunity acid in stomach innate है, phagocytic cell macrophage again innate है, antibody that are antibody production after vaccination, this is correct. This is correct. And natural killer cells again क्या है? innate है. तो यहाँ पे 140 का क्या हो जाएगा? 140 का हो जाएगा C. Okay. Coming to the next question. Question number 141. Mutualism is an interaction where both interacting species are harmed. नहीं, wrong. The statement is wrong. Mutualism में both interacting species को क्या होता है? Benefit होता है. Right? The interaction between the fig tree and the fig waves is an excellent example of mutualism and coevolution where both species complete their life cycles together. This is correct. तो यहाँ पे statement क्या हो जाएगा? ये B होगा. Whereas statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Coming to the next question. Question number 143. 143 में क्या बोला है? Right? Prokaryotic ribosomes are 70S and eukaryotic are 80S. This is correct. Right. Each ribosome has 2 units. This is also correct. The two subunits of 70S, 50S and 30S, correct. Two subunits of 80S, 60S and 40S. This is correct. So all of these statements are true. All of these statements are true. Coming to the next question. Question number 145. Question number 145. 145 में क्या बोला है? Which statement is true regarding the wing structure of the cockroach? Wing structure of the cockroach में क्या statement true है? ठीक है. So basically यहाँ पे the first pair of wings arise from prothorax. Prothorax में नहीं होता है, mesothorax and metathorax में होता है. ठीक है, तो meso and meta में होता है, तो prothorax में तो होता ही नहीं. Hind wings are opaque and leathery नहीं. Forward wings are transparent, ये भी नहीं. Forward wings are called tegmina that cover the hind wings center. This is correct. So forward wings are opaque and leathery, whereas the hind wings are transparent and are used for flight. So option 145 का D. Coming to the next question. Question number 148. Question number 148. Which of the following microbes are primarily involved in production of industrial products and not commonly household products? So industrial products में पहला ही आ जाएगा एस्पेरिल नाइजेट, जो क्या करेगा? वो जो साइट्रिक एसिड बनाएगा. ठीक है, इंडस्ट्रियल केल. एंड ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम जो साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है. साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, इम्यूनोसप्रेसिव है. इम्यूनोसप्रेसिव है. करेक्ट है. ओके. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी ओनली. ए एंड सी ओनली. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 153. Question number 153. 153 में क्या बोला? In an ecosystem, the flow of energy from the sun to the consumers is unidirectional, non-cyclic. This is correct. Ecosystems are open systems that follow second law of thermodynamics where energy is continuously created. देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हमारा इकोसिस्टम फॉलोज बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फॉलो कर रहा है. ठीक है, राइट. सो अगर आपको स्टेटमेंट में दे फॉलोज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड इट इज़ नॉट एंडेड विथ ओनली, अगर ओनली नहीं दे के रखा है तो वो स्टेटमेंट को हम लोग क्या मानेंगे? करेक्ट मानेंगे. अगर सपोज यहाँ पे बोलता कि इकोसिस्टम्स आर ओपन सिस्टम दैट फॉलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओनली वेयर एनर्जी इज कंटिन्यूअसली डिग्रेडेड विद, देन इट वुड हैव बीन अ रॉन्ग ऑप्शन. लेकिन यहाँ पे ओनली का बात नहीं बोला है, बट यहाँ पे सिंपली बोला है कि इट फॉलोज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट. तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ओके. Come to the next question. Which of the following unit of standing crop, that is total living biomass at given time in ecosystem? So standing crop क्या है? At a given moment उस particular area में कितना बायोमास है, तो इसको हम लोग ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. You measure it in ग्राम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. Coming to the next question. Question number 161. Question number 161.
अच्छा, यहाँ पे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन with regarding to cell junctions, choose the correct option with regarding to cell junctions. तो यहाँ पे क्या बोला है, gap junctions perform cementing to keep neighboring junctions together. ये गलत है, इसका ये एक्चुअली किसका काम है, एधरिंग जंक्शंस का काम है, ठीक है. टाइट जंक्शंस हेल्प स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, दिस इज करेक्ट. एधरिंग जंक्शंस फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स बाय कनेक्टिंग टू देयर साइटोप्लाज्म, नहीं, ये गैप जंक्शन का फंक्शन है. टाइट जंक्शन एंड एधरिंग जंक्शन बोथ अलाउ रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड, दिस इज आल्सो रॉन्ग. ये भी किसका फंक्शन है, गैप जंक्शन का. सो व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163. तो अभी 163 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, व्हिच ऑफ द following statements are correct with morphological characters. The presence of wave digits only helps frogs to walk on land but not swim. This is wrong. Wave digits swimming के लिए बहुत helpful है, so this is wrong. Male frogs have wave digits and vocals have, females have copulatory pads. It's wrong. Males में copulatory pads होता है, female में नहीं होता है. Sexual dimorphism is exhibited in frogs by the presence of sound producing vocal sacs in males. This is correct. Right, along with copulatory pads, both male and female frogs possess, नहीं, it is only the male that possesses the copulatory pad. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 163 का हो जाएगा C, 163 का हो जाएगा C. Okay, coming to the next question, which of the following reabsorption secretion process occurs predominantly in the proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule में क्या हो रहा है, ठीक है. सो बेसिकली कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज करेक्ट. सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, नहीं, सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होता है, डीसीटी में होता है, ठीक है. एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, नहीं, अगेन दिस टू आर कहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 164 का बी, 164 का बी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165. Identify the statements that is not correct with regard to the structure of an antibody molecule. तो antibody molecule का कौन सा नहीं है. Variable region of heavy and light chains from the antigen binding site, this is correct. Variable region में bind होता है. Constant region of heavy and light chains is located at the C terminus of the molecule, this is also correct. Each antibody is represented by 2 heavy chains and 2 light chains, this is also correct. Heavy chains and light chains are held together by ionic bonds. Ionic bonds नहीं होता है, डाइसल्फाइड होता है ना, it is डाइसल्फाइड. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 165 का डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168. क्वेश्चन नंबर 168. सो कोलस्ट्रम प्रोवाइड्स क्या, नाउ कोलस्ट्रम इज रिच इन IgA, राइट, जो मदर टू कहाँ पे जाता है, मदर टू बेबी को जाता है, राइट, ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज रेडीमेड एंटीबॉडी है, सो इट इज अ पैसिव इम्यूनिटी बट इट इज नेचुरल. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, 168 का ए, ठीक है. Coming to the next question, question number 169. Flippers of penguins and flippers of dolphins represent certain type of evolution. तो flipper of penguins and flipper of dolphins क्या है, वो analogous organs है, ठीक है, जिसका origin different है but function same है, right. Analogous organ कौन सा type of evolution दिखाता है, convergent evolution. तो option क्या हो जाएगा, 169 का C, 169 का C. Coming to the next question, question number 171. All of the followings are function of ADH except, now ADH क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, राइट. ये डायलिसिस प्रिवेंट करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, एंड ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हाट आर फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू ADH एंड व्हिच आर नॉट. एट्रीब्यूटेड कौन है, इंक्रीजेस इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ये एट्रीब्यूटिंग है. प्रोमोटिंग डायलिसिस, नहीं, वो एंटी डायरेटिक हार्मोन है. डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, नहीं, वो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा. इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, ऑब्वियसली अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज आएगा तो GFR इंक्रीज होगा, GFR इंक्रीज होगा तो बॉडी फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज B एंड C. तो ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक है. Coming to the next question, question number 177, right, question number 177. सो 177 में मैच द फॉलोइंग है, फंक्शन का ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, इट ग्लाइकोकेलिक्स
Glycocalyx forms a thick capsule or loose slime layer. पिलाई क्या करेगा? पिलाई इज एन इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन. फ्लैजेला क्या है? थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल. थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल. राइट. फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे इज अ स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स पार्टिंग आउट ऑफ द सेल. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा A3, B2, C1, D4. इट इज D. Now question number 178, which of the following equations represent exponential growth? Exponential growth, dn by dt is equal to Rn. dn by dt is equal to Rn. Question number 179, again match the following. ठीक है. Coronary artery disease is responsible for making the lumen of the arteries narrow. Pneumonia क्या है? Pneumonia, it is the alveoli that gets filled with fluids leading to severe problems in respiration. Arthritis क्या है? Inflammation of the joints. And diabetes mellitus क्या है? This is high blood glucose due to insufficient insulin. ठीक है. ऑप्शन हो जाएगा B. Coming to the next question, 180, some statements regarding mechanism of cardiac output. A volume of blood pumped by each ventricle per minute is called stroke volume. नहीं, per minute, each ventricle जब per minute करेगा, that is per minute हो जाएगा आपका the volume of the blood pumped out by each ventricle per minute. ठीक है. So that is not stroke volume but it is a cardiac output. ठीक है, per minute हो जाता है. So stroke volume multiplied by heart rate gives out the cardiac output. This is correct. In a healthy individual, the cardiac output averages 5000 ml per liter. This is also correct. The body can alter the cardiac rate by changing only the heart rate but not the stroke volume. नहीं, both heart rate as well as stroke volume को alter कर सकते हैं. तो ये वाला गलत है. The athlete typically has higher cardiac output than ordinary person. This is correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा B, C and E only. ठीक है. तो ये आपका सोल्यूशन था फॉर फर्स्ट फुल टेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए. थैंक यू.